Hi everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So in today's video lecture, we are going to deal with the ossification of bone. So first of all, what is ossification of bone? Ossification of bone, ossification क्या होता है? तो सबसे पहले I will discuss the what is bone. Bone. What is bone? Bone is made up of organic component, organic component and inorganic component. Okay. So organic and inorganic component it is made up of. So basically we have to form these components in the ossification. Okay, understand what I am saying? Okay, so basically the main funda is to originate the bone. So how we will originate the bones? It is originate from the mesenchyme. It is originate from the mesenchyme. Okay, and the process is known as ossification. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ossification बोलेंगे okay so this is all about the term ossification is the formation of the bone from the mesenchyme okay so this is all about the ossification so before bone formation, I have to discuss I've already told you now the organic component and inorganic component. Okay, now. So this is the organic component. What is the organic component here? Here 33% is organic components and here 67% is inorganic components in the bone. After the bone formation, whatever the substance we get and that substance in the bone substance, what we have in the bone substance we have organic and inorganic components okay so inorganic component is basically calcium and phosphate is present okay so in the organic component basically we have the collagen and what type of collagen type 1 collagen you will find okay Type 1 collagen, it is approximately 88 to 90%, 88 to 90%, and it is approx in the 67%, it is 11 to 12%. Okay, so this is how, sorry, this is not. In the 33%, it is 88 to 90%, and also non-collagen. Non-collagen fibers is also percent, it is 11 to 12%. Okay, so 11 to 12%. So what type of non-collagen proteins like glycoproteins, glycoaminoglycans. So this type of and water also. This is a non-collagens organic compounds. Okay, so collagenous organic compound and non-collagenous organic compound. Type 1 fibers is present in the collagen fibers. So we have to make this type of substance from the mesenchyme so that we can get the bone. Understand? A part of this, a part of this, we have three type of cells. First is osteogenic cell. I will discuss. I will told you sometimes I will say the osteogenic cell in the upcoming slides. You will see the main type of cells also osteoblast, osteocytes, osteoclast. This type of cells. The first type of cells is known as osteo genic cells. See, this lecture is totally conceptual and very you can say कि बहुत ज्यादा डीप में मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है ठीक है तो देखो बोन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ताकि जो हमारे आने वाले जो भी हमारा एनाटॉमी है उसमें हम लोग समझ सकते हैं ठीक है ना ठीक है चलो okay so osteogenic cells these are developed in the osteoblast okay so osteogenic cells these are developed from the osteoblast and these are present on the deep layer of the periosteum and the bone marrow okay so this is the bone let's say this is the bone okay so this is the periosteum and this is marrow so the osteogenic cell present in this okay developed in the osteoblast so osteoblast क्या है और next is osteoblast Osteoblast. Osteoblast cells is the bone forming cells. Okay, bone forming blast. मतलब ऐसे समझो कि blast करेगा तो form करेगा. ठीक है. Osteocytes. Osteocytes. What is osteocytes? It is the
it maintains the mineral concentrations of the matrix. Okay, so this is the mineral concentration matrix को जो maintain करता है उसको बोलते हैं osteocytes. Osteoclast, this is the osteocyte is basically mature bone cells. Okay, this is the mature bone cells. Osteoclast, this is the bone destroying cells, bone resorption, bone destroying cells, or you can say the bone resorption cell. Okay, so this bone destroys the bone cells. Okay, so this is the bone resorption cell, bone resorption cells. Okay, so this is all about the types of cells in our bone. Okay, so in the in the sequence of the development, you can see all these type of cells during the development. Okay, next. Now, what we have to learn in this overall video, we will first already see the definition. After that, we will see the types of ossification. There are two types of ossification: intramembranous. I have made the all slides of these. First, I am going to discuss the overview of today's lecture. After that, I will discuss the whole process also. Intramembranous intramembranous ossification, and the second one is intracartilaginous, yeah, endochondral ossification. All these are written in the slide, you can see. All these are already written in the slide, you can see. All these are written in the slide, but what we have to focus, first we will understand the overview. After that we can know the what is ossification, what type of ossification we have. After that, ossification. This is general for all bone. For all bone, this is general. Okay. But for long bone, how long bone is formed? नो लॉन्ग बोन के लिए क्या ऑसिफिकेशन है, किस टाइप का ऑसिफिकेशन है, तो इसका हम लोग अलग से एक ऑसिफिकेशन पढ़ेंगे, ऑसिफिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन. ओके, देयर आर सो मेनी स्टेज, 6 स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑसिफिकेशन लॉन्ग बोन. ओके, after that, for long bone we have separate ossification type. This is general. This two type is general for all types of bone. Okay, for all types. But for long bone, separate ossification. After that, in the long bone, we have two types of ossification center. Ossification center. We have two types of ossification center. During the time of the development, we have two types of ossification center. Okay, first is primary ossification center, second is secondary ossification center. All these are becomes visual during the time of the development of the bone. Okay, after that, if we will discuss, if we will understand the ossification of ossification center, after that we have already gone through the epiphysis. So after that, we will discuss the law of ossification. Okay, what is law of ossification? It is very important question. This short notes may be asked in primary and secondary ossification center is the question in the short notes. Okay, now I am going to conclude about the what type of questions you will ask in the ossification topic. Okay, so this type of intramembranous ossification and intracartilaginous ossification, the short notes may be asked. Okay, short notes may be asked in this question in these topics. Okay, short notes may be asked in the between the difference between the primary and secondary ossification center we have asked, or separately they may be asked the secondary. Basically, most important is secondary ossification center is very important. A part of this law of ossification is also the short notes in your exam. So this is all about the overview. That's why I wanted to tell the overview, because I have to discuss the what the short notes may be asked in this topic. Okay, so this is all about the overview. Now let's move to the our topic. So here I have already discussed the osteogenic cells, osteoblast cells, osteocyte cells, osteoclast cells. So you have to write down in this on your notebook. Now, next, ossification. They may be asked the classification of ossification. So, sorry, definition of ossification. So, all the bone develops from the mesenchyme. The process is known as ossification. Understand the concept here? Okay. Now,
Start from the ossification start from the 8 week of life, intrauterine life till the 21 years of the life. Okay, so this is the 21 years of your age. From the 8 weeks of your intrauterine life, it will be there is a process of ossification always going on. So there are two types of ossification: intramembranous ossification, intracartilaginous ossification. So you have to write down from this point, and after that you have to write down these points. Okay. Now, first we will discuss the intramembranous ossification. This is the process of I have summarized the whole things in one slide. So you have to write down, and whether you can take the screenshot. I have summarized all things in one slide. Okay. So देखो, first we will discuss the intramembranous ossification. What is intramembranous ossification? You know the formation of bone is known as ossification, but bones that is directly developed from the embryonic mesenchymal tissue is known as intramembranous ossification. Okay. So bones that is directly derived from the intramembranous ossification. Okay, mesenchyme tissue. A part of this, cartilage is first from the mesenchymal tissue, which is later ossify on the bone. What is intracartilaginous? Intracartilaginous means first mesenchyme से क्या बनेगा, कार्टिलेज बनेगा, एंड कार्टिलेज से क्या बनेगा, मिनरलाइजेशन होने के बाद वो क्या बनेगा, बोन का फॉर्मेशन होगा. तो इस टाइप को ऑसिफिकेशन को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन. ओके. So this is difference between the intramembranous ossification and endochondral ossification. Okay. Second point is this is occurs usually in the deep layers of the dermis. Okay. Example, which type of bones? Basically, the all the flat bones are formed from the intramembranous ossification, and most of the long bones are formed from the intracartilaginous ossification. Understand the concept here? Okay. So you can take these two screenshot and you will write down the whole things in your exam. Next. Okay, what are the steps of the intracartilaginous and intramembranous ossification? See here, very important, very important. What we have, First, we have what you can see. First of all, mesenchymal tissue. Here is the mesenchymal cells. Here is the mesenchymal cells. A dot dot you can see. A dot dot you can see. Here is the mesenchymal cells here. Okay. So there is a condensation of mesenchymal cells occur. Okay. To form the membranous sheath model. Okay. So to form the एक membranous sheath model का formation हो जाता है. बहुत सारा mesenchymal cells है. Okay, a part of these osteoprogenitor cells located in this sheath and differentiate into the osteoblast. Okay, so a part of this there is a formation of osteoblast also. Here you can see osteoblast. This is the osteoblast. This is the pink color. You can see the osteoblast. This is the osteoblast. This is the formation of osteoblast. How it is from osteoprogenitor cells differentiates to form the osteoblast. Okay, so you know the osteoblast. Now osteoblast is the bone forming cells. So it will form the what type of? It form the ground substances and collagens. You know the bone contain the collagens fiber. So basically most of the things is the collagen fiber. So two types we have to make the two substance. First, collagen fibers means organic substance, and second is inorganic substance like calcium salt, phosphate salt. So first, it will form the calcium collagen substance, so formation of osteoid tissue. Okay, so how it is formed? So first, the site where the osteoblast first appear is known as ossification centers. So ossification center क्या होता है? जहाँ पे सबसे पहले osteoblast appear होता है, तो वही तो बोन का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, बोन का फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि ग्राउंड सब्सटेंस एंड कोलेजन का फॉर्मेशन करना, उसके बाद मिनरलाइजेशन होना. दिस इज ऑल अबाउट द ossification. You have to make the concept like that. Okay, so osteoblast secretes. Now, what osteoblast do? You know the osteoblast is the bone forming cell. So it is secretes the organic substance like ground substance and collagen fibers. What type of collagen fibers here? Type 1. Type 1 collagen fibers here formed. Okay, in the intercellular space to form the osteoid tissue or bone matrix. तो osteoid tissue का formation होगा and bone matrix का formation होगा. Here you can see the ground substance or like that. This you can see the ground substance, and osteoblast cells persist here also. So you have to make this diagram on your notebook. Okay, osteoblast. Here the collagen fibers also seen. Collagen fibers also seen in this picture.
Now, after that, under the influence of alkaline phosphatase secreted by osteoblast. Now, next, osteoblast secretes the alkaline phosphatase. What is the osteoid tissue is mineralized. Now, the osteoid tissue is mineralized where the calcium salts are deposited. Okay, mineralized with the calcium salts to become the bone. Osteoblast now become trapped in the mineralized matrix is called osteocytes. Now, this is the mature bone cell. Okay, this is a mature bone cell. So after the mineralization of osteoid tissue, what we have, this is the matured bone cell is known as osteocytes. So how osteocyte is formed? Osteoblast is mineralized. Osteoblast is trapped in the mineralized matrix is known as osteocyte. So basically, initially when the matrix mineralization does not happen, it is known as osteoblast. After the mineralization, we can say the osteocytes. So this is the formation of intra bone via the process of intramembranous ossification. So this is all about the intramembranous ossification. Next is intracartilaginous or endochondral ossification. So, I've already told you that first cartilage is formed, after that bone is formed. Okay, first cartilage is formed, after that bone is formed. So that is intracartilaginous ossification. From the name you can understand. Okay, so first step is the cartilage cells like chondroblast. Here is the blast. Blast means cartilage forming cell. Cartilage forming cells is known as chondroblast. Okay, of cartilage model enlarge and matrix surrounding them is calcified under the influence of alkaline phosphate secreted by cartilage cells. So first of all, here is the cartilaginous model. Here is a matrix. So this is blue color. You can see the matrix. Okay. So cartilage cell die and disappear, leaving behind empty space is known as primary areolae. So basically what here you can see the enlarged, you can see here the enlarged chondroblast. Chondroblast secretes the, here is the matrix ossification मैट्रिक्स में यहाँ पर में कैल्सिफिकेशन पहले हो गया है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन पहले हो गया है इस मैट्रिक्स में। तो हमें क्या करना है, हमें कैल्सिफिकेशन पहले हो गया है तो अब जो मैट्रिक्स बन रहा है ना यहाँ पर में, ये पूरा कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है ये पूरा। ओके, ये पूरा कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। उसके बाद जो यहाँ पर में हियर इज द एनलार्ज एंडोकॉन्ड्रल सेल्स नोन एज एंडोकॉन्ड्रोब्लास्ट एंडो सॉरी chondroblast chondroblast here you can see the chondroblast. Okay, so chondroblast, there the cells inside them becomes dead. ठीक है, becomes dead and forms the empty space here. This becomes dead. ये सब क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सारा जितना भी chondroblast है ये सब मर जाता है। ठीक है, ये सब मर जाता है और एक स्पेस, खाली स्पेस बन जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एरियोले। ठीक है, cells on the surface of periosteum differentiate in the osteoblast. तो सरफेस ऑफ द पेरियोस्टियम में क्या होता है, नाउ नेक्स्ट क्या होता है कि which enters at the site of ossification along with the blood periosteal bud. So what happens here? You can see here. देखो, now here the formation of osteoblast. Osteoblast is formed from the cells of the periosteum. On the surface of the whatever the cells in the periosteum is differentiates to form the osteoblast. अब जब osteoblast बन जाता है, ठीक है, which enters the site of ossification along with the blood vessels is known as periosteal blood. Periosteal blood is this is known as periosteal bud hair formation also. A part of the osteoblast cells also. Okay, so most of the calcified matrix is observed forming the large empty spaces. So most of the calcified matrix. This is the calcified matrix. In orange color, you can see the calcified matrix. So this calcified matrix becomes absorbed and forms the large empty space known as secondary areolae. So primary areolae you can see here is the primary areolae is small and large empty space is known as secondary areolae. Okay. A part of this, you can see the thin bars of the calcified matrix you can see. Okay, now see अब क्या होता है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, leaving behind the thin only the thin bars of calcified matrix. Okay, you can see the thin bars of the calcified matrix.
Now, the new bone osteoid is laid down on the surface of calcified bar of the matrix. So, no, now what happens? The new osteoid cells, osteoid tissue, osteoblast cells, here you can see the osteoblast cells becomes laid down on the surface of calcified bar of the matrix. So, this is the calcified bar of the matrix. So, in these cells, in these, there is a new osteoblast cells becomes overridden. All these osteoblast cells become overridden, okay, along the bars of the calcified matrix. So you understand what happened here? Okay, when the osteoid cells come, it will becomes the mineralization. Mineralization occurs and leads to the formation of osteoid. So this type of bone is formed from the cartilaginous endochondral. First, what we have, we don't have to make the cartilage. You understand now? We don't have to make any cartilage. First of all, we have chondroblasts that forms the cartilage. So we have to destroy it because we have to make the bones. So here is the blind space or empty space you can see known as primary areola. After that, these areola becomes the enlarge and forms the secondary areolae. Okay, large empty spaces. And a part of the around the secondary areolae, you can see the thin bars of the calcified matrix. Okay, so around the thin bars of calcified matrix, there is a formation of what? There is a formation of osteoblast, and now the again calcification or mineralization occurs and leads to the formation of bone. So understand what type of endochondral ossification, how the endochondral ossification occur. Okay, so this is all about the endochondral ossification. Understand? Now let's move to the ossification of long bone. I will discuss specifically for the long bone. What type of long bones like humerus, tibia, अल्ना, ठीक है। दिस ये सब जो अपर लिम्ब का और लोअर लिम्ब का जितने भी लॉन्ग बोन्स है ना, वो सभी हमें क्या करना है, उसका ऑसिफिकेशन देखना है। तो तुम्हें पता है ये एक तरीके का लॉन्ग बोन है। ओके, ठीक है। ये इसका एपिफाइसिस हो गया, ये आपका मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस हो गया। ठीक है, तो तुम्हें पता है एक सेंटर बीच में होगा। कोई भी चीज यहाँ से यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। मान लो पहला सेंटर यहाँ स्टार्ट हुआ और ये जो सेंटर है ये यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। आगे गया एक और सेंटर का फॉर्मेशन हो गया जिसको बोलेंगे, इसको तो हम लोग प्राइमरी सेंटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर। तो बेसिकली एक तरीके का ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखो ताकि तुम कुछ लिख पाओ एग्जाम में अगर सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन आता है तो। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और डीप में देखते हैं कि क्या है ऑसिफिकेशन। सो it is following a simplified account of the intracartilaginous ossification. I have already told you intracartilaginous ossification. So it is basically the simplified account. Simplified account means a simplified way to understand the ossification of the long bone. Basically, all these are same. This process will be happen like that also here. So, a part of this slide, I am going to discuss this slide because in this slide, I have discussed the all step along with the diagram also. So, you have to make these things in a separate page. Means you have to make the landscape. You have to write on the landscape in this type of ossification. Okay, for this type of ossification. Now, first step one here you can see. First bone is laid down as a hyaline cartilage model surrounding by the perichondrium. So this is the bone. This is the air cartilaginous. This is the cartilage. You can suppose like this is cartilage and this is surrounded by perichondrium. Cartilage is surrounded by perichondrium, not okay. So this is not by periosteum. This is surrounded by only perichondrium. Understand? So this is surrounded by periosteum. Now there is a primary center of ossification, then appears in the center of the shaft and spread towards the end of the end to form the diaphysis. So, first of all, there is a primary center ossification. Primary center of ossification appears, and after that, there is a ossification starts means mineralization and osteoids, tissue cells formation. All these things, whatever I discussed in the
endochondral ossification. This type of ossification occurs from the primary center and spreads towards the end of the long bone. So this is spread like that. Okay. At this time, periosteum lays down a collar of the bone. After that, when this is the bone, no, this is the we have to make this type of whole bone like that, whole bone like that. So there is a space here. There is a formation of a space is known as periosteal collar here. Okay, so there is a space you can see the periosteal collar. Okay, a part of this you can see the primary ossification center. From that, the ossification starts and move towards the end of the bone. Okay, so periosteal collar, you can see here the periosteal collar along the circumference of the shaft. So this is the shaft ना, this is the shaft. The circumference of the shaft में क्या दिखेगा आपको periosteal collar दिखेगा. Now next step is step 4 में later on one or more secondary center of ossification develops at the end of the cartilaginous model. So here is a secondary center of ossification also developed. Okay, why this ossification center developed? Because from this center there is a formation of what? There is a formation of uh, osteoblast cells. Okay, osteoblast cells. There is a formation of osteoblast cells, and osteoblast cells forms the bone matrix on bone substance. Okay, so this is the main process here. The coming of secondary center and primary center. This is the main motto. Okay, this there is a secondary center appears. Okay, and form the epiphysis. So epiphysis is formed from the secondary center. Okay, diaphysis is formed from the primary center. Okay, the epiphyseal. Now, next is step 5. Step 5, epiphyseal cartilage is spreading, separating epiphysis from the diaphysis and articular cartilage at the end of the long bone. So, this is the epiphyseal cartilage. Epiphyseal cartilage separates the, this is the epiphysis, this is the diaphysis. Okay, this is epiphysis, this is diaphysis. So, a part of that, after that, the epiphyseal plate of cartilage continues to produce the new cartilage and thus enables the bone to grow in the length. Okay, so this you understand. Epiphyseal. From this region, epiphyseal plate of the cartilage also known as growth plate. So here is the growth occurs na. Epiphyseal cartilage divides and forms the hair bones. For again, more bones are formed here. More bones are formed here and forms the bone. After that, a line becomes superficial. A line becomes remain a scar like lines, like a scar you can see here. You can see the scar here. Epiphyseal lines will remain after the vein ossification occurs. Okay, so this here you can see the long bone after the ossification. Understand? So for the ossification, I've already told you the two types of ossification here. What are ossification centers? So these are the sites where bone formation begins. I already told you. So there is a site of primary ossification and a secondary ossification. From that the bones starts to appear, formation appears. Okay. So ossification center is generally classified into two types: primary ossification center and secondary ossification center. Okay. So I already told you the primary ossification center occurs in the लोकेशन क्या है डायाफाइसिस सेकेंडरी का लोकेशन क्या है एंड्स ऑफ द बोन मतलब एपिफाइसिस इज बेसिकली टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ये कब आता है ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट अराउंड द 8 वीक ओके अगर हम लोग एक्यूरेट बात करते हैं तो कितना टाइम होता है एक्यूरेट बात करते हैं तो हम लोग 7th to 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ ओके ये आफ्टर बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर आता है इनिशियल बोन फॉर्मेशन कब होता है इनिशियल बोन फॉर्मेशन होता है प्राइमरी ओसिफिकेशन फर्दर ओसिफिकेशन और बोन को ग्रोथ कराने में कौन हेल्प करता है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर इसका इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द बोन इंक्लूडिंग द डायाफाइसिस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ एंड शेपिंग ऑफ द बोन तो ये ग्रोथ और शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये पार्ट्स ऑफ द बोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ओके सो when the short notes will come, you have to write down and make the diagram of the primary center of ossification like that. Okay, this is the primary centrifuge, this is the secondary. Okay, so I have told you na, so your diagram. So you have to make this diagram. Now, this all I have discussed. Primary center of ossification is the where the initial formation of the bone starts. It replaces the cartilage model with the bone tissue. So here initially you have already seen na
initially a cartilage you can see surrounded by the perichondrium. After that, the primary ossification center occurs, and it all this shaft is replaced to the bone tissue. Okay, replaced to the bone tissue by cartilaginous from the cartilage. So, what is the functions? It is responsible the formation of major part of the bone, including the diaphysis. Okay, so its main function is to initiate the bone development process. So मेजर पार्ट ऑफ द बोन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, उसी तरीके से सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर के लिए लोकेशन कहाँ है एपिफाइसिस में, टाइमिंग क्या है आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। तो मेन चीज आपको ये है, ठीक है। यूजुअली फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ टू द फिफ्थ ईयर्स ऑफ एज सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और चलता हमेशा रहता है 21 ईयर्स ऑफ द एज तक, ठीक है। ossification, the process secondary center of ossification continues to the bone formation by ossify, तो bone formation के लिए continuation start हो गया रहता है, and the process happens independently of the primary center of ossification। तो ये primary center of ossification पे कुछ dependency नहीं दिखता है during the bone formation। So help in the growth of the bones, contribute to the lengthening of the bone के length के लिए कौन responsible होता है, secondary ossification center, and secondary ossification center are crucial for the proper formation of the joints surface and overall shape of the bone के लिए भी ये responsible होता है। Okay, so we have already seen the ossification. Now, a part of this, we have to discuss the law of ossification. So before the law of ossification, we have to discuss the one एक तरह का कहावत है, dictum, ठीक है। To the elbow I go and from knee I flee। Okay, to the elbow मतलब elbow से, ठीक है, यहाँ तक हम जाते हैं नीचे की तरफ। And when I flee, जब हम लोग इस तरीके से बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं flee। When I flee, I from the knee I flee। तो नी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर में बैठते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग इस तरीके से बैठते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं, एक तरीके का डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन का। तो लॉन्ग बोन यहाँ होता है ना, यहाँ होता है, तो लॉन्ग बोन का डायरेक्शन हम लोग शो करते हैं इस तरीके से। तो लॉन्ग बोन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड दिखेगा, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें, द न्यूट्रिएंट foramen in the shaft all the long bones is always opposite direction of growing। Okay, and except that, sorry, this is the direction of nutrient foramen, I'm sorry, ठीक है। So this is the direction of nutrient foramen। Okay, this is the direction of nutrient foramen। So this is the direction of nutrient foramen। So bone कहाँ की किधर की तरफ ग्रो करेगा, bone will grow like that। Okay, opposite to the nutrient foramen, bone will grow like that, opposite to the nutrient foramen। तो बोन का ग्रोथ कैसे होगा, ये तुम्हारा है बोन का ग्रोथ, ठीक है। और ये तुम्हारा है न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन, अपोजिट होता है दोनों का, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पर में, एक्सेप्ट द शाफ्ट ऑफ द फिबुला विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रोइंग एंड। तो फिबुला में जब तुम देखोगे ना, तो जिधर बोन ग्रो करता है उधर ही तुम्हारा क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन का, उधर ही डायरेक्शन होगा। ये किसके लिए होगा, फिबुला के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा पूछते हैं कि फिबुला का जो फिबुला में क्या होता है, इसका डायरेक्शन कौन सा बोन है जिसका डायरेक्शन न्यूट्रिएंट फोरामेन की तरफ होता है, बोन का डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रोथ का। एक और चीज यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रोइंग एंड क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है ह्यूमरस का, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो ये तुम्हारा ग्रोइंग एंड है, ये तुम्हारा रेडियस और अल्ना का ग्रोइंग हैंड है, ठीक है। ये रेडियस और अल्ना, टिबिया और फिबुला का ग्रोइंग एंड है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, चलो ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ एपिफाइसिस या फिर लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस और लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन। तो क्या होता है ये लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, तो ये बोलता है एपिफाइसिस दैट ऑसिफाइज फर्स्ट। ऐसा एपिफाइसिस जो सबसे पहले ऑसिफाई करता है, वो फ्यूज करेगा डायाफाइसिस से, लास्ट में डायाफाइसिस से फ्यूज करेगा, ठीक है। और इसका उल्टा सोचो, द एपिफाइसिस दैट ऑसिफाई, ऐसा एपिफाइसिस जो लास्ट में ऑसिफाई करेगा, वो पहले फ्यूज करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज फ्यूला के लिए नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज फ्यूला के लिए नहीं होता। मतलब epiphysis that ossify first fuse with the diaphysis lastly, okay, and the epiphysis that ossify last fuses the first।
So this is like opposite. Okay, na? So next, this is the first law. Second is the end of the long bone where the epiphysis appears first, fuses the last is the growing end of the bone. So end of the long bone where epiphysis appears first. So जहां पे सबसे पहला एपिफाइसिस आएगा, जो लॉन्ग बोन का एंड होगा वो सबसे पहला एपिफाइसिस आएगा जो अपियर्स सबसे पहले किया, मतलब ये वाला लाइन जो सबसे पहले ओसिफाई किया, ठीक है ना, जो सबसे और सबसे लास्ट में फ्यूज किया, ठीक है, एंड द फ्यूजर लास्ट इज नोन एज ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, सो दिस इज नोन एज ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, ओके, so this is known as growing of the end of the bone. So this is the epiphysis which fuses the first, okay, which appears first and fuses last. Okay, so ossifies first and fuses last. Okay, now. So this is the whole concept here. Direction of the nutrient artery is always away from the growing end. Okay, so here is the direction. This is the growing end ना, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, इधर की तरफ. इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ. तुम ये डायग्राम में देखो. ये मैं क्या बताया हूं, तुम थोड़ा कोरिलेट करो इस दोनों डायग्राम को. इस दोनों डायग्राम को थोड़ा कोरिलेट करो, अपने आप समझ में आएगा. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये. ये क्या मैं दिखा रहा हूँ, रेडियस और अल्लाह के बारे में दिखा रहा हूँ. तो इसका ग्रोइंग एंड इधर है, इसका जो एपिफाइसिस इधर है. तो इसका ग्रोइंग एंड किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, इधर होगा कि इधर होगा. ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें रेडियस, ये तुम्हें ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, मतलब ग्रोइंग एंड किधर है तुम्हारे पास, ग्रोइंग एंड किधर है, जहां पर तुम्हारा ये दिखा रहा हूं मैं, ग्रोइंग एंड, दिस इज द ग्रोइंग एंड. तो ये डायरेक्शन इसका इधर होगा. तो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ. तो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन ऊपर, ग्रोइंग एंड नीचे है, तो ग्रोइंग एंड का डायरेक्शन नीचे, ठीक है ना. सिंपल सा एक तरीका है कि हाथों में तुम्हारा सबसे ऊपर में ग्रोइंग एंड होगा और एक सबसे लास्ट में ग्रोइंग एंड होगा, और पैरों में तुम्हारा क्या होगा, एकदम नी के पास में ग्रोइंग एंड होगा. तो ग्रो इधर करेगा और एक ग्रो, इसका ग्रोइंग एंड इधर होगा. टीबिया एंड फिबुला का ग्रोइंग एंड इधर होगा, इसका ग्रोइंग एंड इधर होगा, टीबिया का ग्रोइंग एंड इधर होगा ऊपर की तरफ, इसका फीबर का ग्रोइंग एंड नीचे की तरफ होगा. तो इसका फोरामेन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका फोरामेन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक्सेप्ट फिबुला, फिबुला का ग्रोइंग एंड इसका डायरेक्शन ऊपर ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फिबुला, न्यूटेन फोरामेन का डायरेक्शन ऊपर होता है. तो ये सब था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन और ग्रोइंग एंड का. इसी को समझाने के लिए मैं पहले न्यूट्रिएंट फोरामेन बताया, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनियन ऑफ ऑसिफिकेशन, लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन आपको बताया. तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है. लॉन्ग बोन में ग्रोइंग एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट अबाउट 20 years, अपोजिट एंड एट 18 साल तक वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है. इन द बोन्स अदर देन लॉन्ग बोन एपिफाइसिस फ्यूजेस कब करता है, कोई दूसरा अगर लॉन्ग बोन है, ठीक है, दूसरा लॉन्ग बोन अपार्ट ऑफ दिस, ठीक है, अपार्ट ऑफ दिस लॉन्ग बोन कोई दूसरा बोन्स है, तो उसका एपिफाइसिस का फ्यूजन कब होता है, 20 से 25 साल के बाद उसका एपिफाइसिस के बीच में, 20 से 25 साल के बीच में उसका एपिफाइसिस का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो मैंने आपको जो ओवरव्यू बताया था, सबसे पहले आपको बताया था इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स आता है, इंट्रा कार्टिलेज ऑसिफिकेशन जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स आता है, डिफरेंस में भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन आपको बता दें, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है. वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको घुमा फिरा के वाइवा के लिए पूछेगा. तो आप तो बस ये डायग्राम याद रखो ना कि इसका ग्रोइंग एंड किधर है, उसके अपोजिट में बस उसका तुम वो फिबुला, वो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन बता देना, ठीक है ना. उसके अपोजिट में न्यूटन फोरामेन का डायरेक्शन बता देना, एक्सेप्ट फिबुला, ठीक है ना, एक्सेप्ट फिबुला है तो फिबुला पे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मोस्टली फिबुला का ही पूछेंगे. तो ये समझ में आ गया तुम्हें, ओके. ऑसिफिकेशन सेंटर बार बार आता है, सेकेंडरी और प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बार बार शॉर्ट नोट्स आता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑसिफिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिफिकेशन. अब एक हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा किस पे, ज्वाइंट्स पे, ठीक है. ज्वाइंट्स आपको मैं बता दूं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता ही आता है. उसमें भी मैं आपको पूरा ओवर भी बताऊंगा पहले, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स और किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पे, और क्या वाइवा में क्वेश्चंस और क्या एमसीक्यू भी आते हैं, वो सारा आपको मैं वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है. चलो, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. एंड ऑसिफिकेशन बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह तुम्हें, क्योंकि जो भी है तुम ऑसिफिकेशन सेंटर देखोगे ना, अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया, ये सारे में तुम्हें ना ऑसिफिकेशन सेंटर करके बॉक्स में बना करके ऑसिफिकेशन सेंटर दियो, तो अब तुम ना उसको पढ़ना, ठीक है. तो नाउ यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर ऑल्सो.
Understand? So this is all about today's lecture. I hope you like the video and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day.